Rohan Dange, your faculty for economy. And in this session's current affairs, we are going to take a look at, or we are rather going to continue from where we left last week. Last week, we spoke about we looked at the basics of Finance Commission. What are its roles, responsibilities? What is its statutory positioning within the Constitution of India? Under whose chairmanship is it constituted? So these are the basics which we dealt with in the past week, and now in this week we are going to talk about the recommendations of the 15th Finance Commission. So more or less this is going to help you from the perspective of writing good and quality answers in your mains examination. So you got to be extra careful when you're dealing with hot button topics like these, and therefore a thorough understanding and a systematic investigation of these topics is expected from serious candidates like you. Keeping that in mind, I'm going to continue from where I left off last week, which is the recommendations of the 15th Finance Commission. So this is Rohan Dange welcoming you to Scholar IS. Let's begin our discussion for the day. So when you talk about the recommendations, there is something called as a vertical devolution, right? Vertical devolution simply refers to the devolution of taxes of the union to the states. Union के पास पैसा है through the mobilization of resources in the form of income tax or in the form of other taxes, and अब वो पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की जरूरत होती है, right? So that is called as a devolution of taxes of the union to the states. So every finance commission makes its own particular recommendation. This finance commission has recommended maintaining a vertical devolution at 41%. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ that at 41%, मतलब 100 रुपया अगर सेंटर के पास आया है in the form of taxes, so 41 rupees will be distributed amongst the states. अगर मैं 14th finance commission की बात करूं, मतलब इससे पहले का जो finance commission था, अगर मैं उसकी बात करूं, so during their tenure or their regime, their key recommendation was that the devolution of taxes of the union to the states should happen to the tune of 42%, right? तो एक जाहिर सी बात है कि 1% कम दिख रहा है इस बार, okay? So it is at the same level of 42% of the divisible pool as recommended by the 14th Finance Commission, and क्योंकि more or less the same ही है 41-42, and it has made the required adjustment of about 1% due to the changed status of the erstwhile state of Jammu and Kashmir. ये 1% घटाया है इसलिए क्योंकि एक जो 1% है that will be appropriated for the development of Jammu and Kashmir region, right, and Ladakh, राइट. सो क्योंकि अभी यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर, सो क्वाइट नेचुरली वहां पे आपको डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए आपको वहां पे स्पेशल डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स करना जरूरी है. सो 41 + 1 42 ही होता है. सो बेसिकली the amount of or the quantum of money which is going to devolved by the center to the states is going to be the same in totality, but distribution wise 41% is basically kept as a separate quantum for the states, because 1% is going to be specially distributed amongst the union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir. Now there is something called as a horizontal devolution also, that is allocation between the states, right? So for horizontal devolution, it has suggested 12.5% weighted to the demographic performance, 45% to income, 15% each to the population and area, and 10% to forest and ecology, and 2.5% to tax and fiscal efforts. ये मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, ठीक है? So हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन और वर्टिकल डेवोल्यूशन में फर्क इतना ही है कि वर्टिकल डेवोल्यूशन इज एक्चुअली फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स, एंड हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन जो है वो अमंग्स द स्टेट्स आपको करना है. मतलब हिमाचल प्रदेश को कुछ पैसा मिलेगा, महाराष्ट्र को कुछ पैसा मिलेगा, तमिलनाडु को कुछ पैसा मिलेगा. अब ये पैसा, अब सभी जाहिर सी बात है कि सारी स्टेट्स को सेम लेवल पे पैसा तो नहीं मिलेगा, बिकॉज हर स्टेट की अपनी एक लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, हर स्टेट का अपना एक डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, हर स्टेट का अपना एक पर्टिकुलर एंड पिक्यूलियर ज्योग्राफी भी है. सो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए हैं और उनको वेट्स दिए गए हैं, और उन वेट्स के बेसिस पे पैसा जो है वो डिवॉल्व होगा. सो दिस इज एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स. मतलब हो सकता है कि महाराष्ट्र को 100 करोड़ मिले, और हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश जिसकी जरूरतें ज्यादा है और जहां पे फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी अच्छा मेंटेन्ड है, जहां पे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, हो सकता है उसे 200 करोड़ मिले. जाहिर सी बात है, राइट? सो एलोकेशन बिटवीन द स्टेट्स जो है वो अलग अलग हो सकता है. इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन. और सेंटर से जो स्टेट्स को पैसा जाता है एक टोटलिटी के तौर पे, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, ठीक है? सो आई होप दैट द कांसेप्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन एंड वर्टिकल डेवोल्यूशन इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर टू यू, राइट? नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स टू स्टेट्स, राइट? अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू स्टेट्स का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो ग्रांट का
जहां पे भी ग्रांट ये वर्ड आ जाता है, बी रेस्ट अश्योर्ड दैट दिस इज नॉट अ लोन, दैट मींस द स्टेट डजंट रियली हैव टू पे इट बैक, ओके, टू द सेंटर। द सेंटर गिव्स द मनी टू द स्टेट कि भैया चलो ग्रांट है, वन टाइम ग्रांट है, पैसा ले लो, खुश रहो, डेवलपमेंट करो, जो करना है करो, पैसा वापस देने की जरूरत नहीं, राइट। सो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टू स्टेट्स दिया जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्यों कहा? क्योंकि कई स्टेट्स में रेवेन्यू डेफिसिट हो सकता है, ओके, होता ही है ऐसा नहीं कह रहा हूं, मगर हो सकता है। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का ये मतलब है कि जितना मुझे स्पेंड करना है और जितना मेरे पास इनकम है उसमें डिफरेंस है। मतलब अगर मुझे 100 रुपया स्पेंड करना है तो मेरा रेवेन्यू हो सकता है 80 रुपया ही हो। जैसे हमारा अभी हमने कोविड 19 की महामारी के वक्त देखा कि स्टेट्स को पैसा स्पेंड बहुत करना है आइडियली, क्योंकि वैक्सीन रोल आउट प्लान्स है, देन आपको जैसे कि बहुत सारा फ्री राशन देना पड़ेगा, बहुत लोगों को मनरेगा के तहत पैसा देना पड़ेगा, राइट। ये सारी पैसा, ये जो सारी चीजें ये स्टेट को मैनेज करनी पड़ेगी, मगर स्टेट के पास उतना रेवेन्यू है क्या? नहीं है। व्हाई? बिकॉज पीपल आर नॉट मेकिंग मनी इन 2020 एंड 2021 ऑल्सो। अब तो हम देख रहे हैं कि 2021 भी इफेक्टिवली गया, राइट। यहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नॉट गोइंग टू टेक ऑफ, राइट। सो इसका ये मतलब है कि जो पैसा आएगा थ्रू द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस स्टेट्स के पास, वो भी कम ही आएगा, राइट। सो अब पैसा कम आ रहा है और आपके स्पेंडिंग ऑब्लिगेशंस बहुत ज्यादा है, राइट। If your spending obligations far outweigh your revenue mobilization, then obviously that will lead to a situation of deficit. That is called as a revenue deficit, right? अब इस revenue deficit के इस ब्रिज करने के लिए सेंटर जो है ग्रांट्स देता है स्टेट को कि भैया ठीक है, आपके पास 20 करोड़ रुपया कम है, 100 करोड़ रुपया कम है, हमसे ले लो, ठीक है। So revenue deficit is defined as a difference between revenue और करंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स दैट इंक्लूड टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स रिसीट्स भी होती है जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और नॉन टैक्स रिसीट्स भी होती है। नॉन टैक्स रिसीट्स में पेनल्टीज है, फीस है, ये सारे चार्जेस है, सरचार्ज है, ये सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। सो फाइनेंस कमीशन हैज रिकमेंडेड पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स अमाउंटिंग टू ₹3 ट्रिलियन, मतलब इसका ये मतलब हो गया 3 लाख करोड़, राइट। 3 लाख करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सेंटर स्टेट्स को देगा, राइट। जब फाइनेंशियल ईयर 26 एंड होगा, मतलब अगले 5 साल में आपको, ये एक साल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, in the course of next 5 years from 2021 to 2026, the center is going to give $3 trillion rupees, that is 3 lakh crore rupees to the states in the form of revenue deficit grant, ताकि स्टेट्स का भी जो डेफिसिट सिचुएशन है वो स्टेबलाइज हो जाए। अगर डेफिसिट सिचुएशन स्टेबलाइज नहीं होता तो अंत में सहन कौन करेगा, सफर कौन करेगा? ये तो जनता ही सफर करेगी, आम जनता सफर करेगी, सिटीजन सफर करेंगे, क्योंकि स्टेट्स स्पेंड नहीं कर पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएगा। आज हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हमारे लोग मर रहे हैं। आप बिलीव कर सकते हो इस बात पे? Our people are not dying because of the severity of the disease. I mean, yes, people are dying because of the severity of the disease as well, but we are losing many people around us just because there is a paucity of, and there is a, what you can say, paucity of funds, and there is a chronic shortage of oxygen cylinders, chronic shortage of ventilators, right? तो ये तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि प्रिवेंटेबल डेथ्स है ये तो। और ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि स्टेट स्पेंड नहीं कर पाए। स्टेट्स क्यों नहीं स्पेंड कर पाए? क्योंकि स्टेट्स के पास पैसा नहीं था। स्टेट्स के पास पैसा नहीं था और सेंटर ने पैसा दिया नहीं। जो जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट के तहत जो पैसा देना चाहिए था वो लास्ट ईयर सेंटर ने रिलीज जल्दी किया नहीं, और स्टेट से कहा कि आप बोरो कर लो। तो स्टेट्स कहाँ से बोरो करते? इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करते, आरबीआई से बोरो करते, पब्लिक से बोरो करते। पब्लिक के पास भी पैसा नहीं तो पब्लिक से कहाँ बोरो करेंगे? आज हमारी इकोनॉमी की ये हालत है, राइट। और इसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली स्पीकिंग कि दिस 3 ट्रिलियन रुपीज अमाउंट इज ऑल्सो नॉट इनफ। हालांकि देखते हैं कि 2021 के बाद सिचुएशन कैसे इवॉल्व होती है, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट वी विल नीड मच मोर देन 3 ट्रिलियन रुपीज इफ वी वांट टू स्टेबलाइज आवर इकोनॉमी। Anyways, we are more concerned about what are the critical recommendations within the 15th Finance Commission, and this is one of them, right? So from an examination point of view, इतना तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप मेंस में उत्तर में इस पॉइंट को मेंशन करके आओ, ताकि आपको एग्जामिनर 2 अंक ज्यादा दे। Okay. So the number of states qualifying for the revenue deficit grants decreased from 17 in fiscal year 2022, right, to 6 in fiscal year 2026, which is the last year, right? मतलब initially in the fiscal year 2022, 17 states would be the recipients of this revenue deficit grant by the center to the states, and by the time we come to fiscal year 2026, it will be reduced to 6.
This means what? This means that the needs of every state, the financial needs of every state are different. And it is also expected that big and well performing states like Tamil Nadu and Karnataka and Gujarat and Maharashtra will recover soon out of this pandemic. And perhaps they will be able to mobilize more resources. The state government would be more, what you can say, capable to facilitate more resource mobilization. So these kind of states may not need centers support at all times, right? So that is a possibility. Now there is something called as performance-based incentives and grants to states. This is a very important concept, right? So these are the grants which revolve around four main themes. The first is the social sector, where it has focused on health and education, right? So that means if you're doing well in the health sector and education sector, then you might receive more in the form of grants, right? So this is something called this is something which is seen in the realm of carrot and stick policy. The center is clearly giving out an indication to the states and sending out a clear message to the states that भैया ऐसा है कि you perform on the parameters of health and education, and if you do so, then we will definitely reward you with performance-based incentives. Right. Second is a rural economy, where it has focused on agriculture and the maintenance of rural roads. So the rural economy plays a significant role in the country, as it encompasses 2/3 of the country's population and 70% of the total workforce and 46% of national income. Now, this is something that again comes very handy. This is not something that they will ask you in prelims, but this kind of information comes in very handy to quote in the exam, right? So I hope you're also making your own notes while we are going through with these lectures. The third pillar of performance-based incentives is the governance and administrative reforms, under which it has recommended grants for judiciary, statistics, and aspirational districts and blocks. Right. So this is basically to improve local level governance, urban governance, and local level governance. Right. If municipalities and panchayats are performing well, and if they are bringing about administrative and governance reforms, then they will also receive performance-based incentives. Right. I mean the states, and then the states will devolve those funds to the respective local bodies. The fourth pillar is that it has developed a performance-based incentive system for the power sector also, which is not linked to grants, but provides an important additional borrowing window for states, right? So this is the kind of basic and preliminary analytical information that you need to tackle any question regarding the 15th Finance Commission. So till the time we meet next, this is Rohan Dange signing off from Scholar IS. Stay healthy, stay safe, stay inside, mask it up, and please sanitize and provide as much support to the people around you as much possible. Okay, this is the time when people around you might be in dire straits, dire needs, right? You could do a simple act of just amplifying their voice on social media or tagging a tweet to your local politician. You could do anything, right? This is the time that we as a country need to come together. Okay, and this is the time when we as responsible citizens demonstrate it through our actions. So I hope, it is my firm belief that we must do it, and I hope that the students at Scholar IS are also responsible citizens and they will push forward with their humanitarian initiatives. If not anything, please stay at home. Please don't go out without any reason. So with this, I wrap up today's lecture. Thank you, boys and girls. Take care.